Hey, what's up guys? Welcome to Art Blues और आज हम लोग बनाएंगे फ्लावर सर्कल। ये डिज़ाइन के लिए हम आज यूज़ करेंगे एक A4 साइज वाटर कलर पेपर और एक मास्किंग टेप से इसका बॉर्डर मैंने टेप कर दिया है। I'm going to keep size 6, size 4 and size 1 brushes, but mainly I'm going to use size 4 and 1 today. Since it's a circular design, हमको एक circular motif follow करना है. I'm taking the masking tape और एक बहुत light green shade से मैं यहाँ पे एक half circle line add कर रही हूँ. इसी line को हम लोग बाद में follow करेंगे to design our leaves and flowers. Now I have my circle ready. तो अभी हम लोग बहुत light green से एक फर्स्ट लेयर ऑफ लीव्स ऐड करेंगे alongside the circular line. And now I'm going to mix some very light shade of pink color और यहाँ पे छोटे छोटे pink flowers ऐड करेंगे. I'm keeping a gap in between the petals. मतलब flowers के center में I'm keeping the whiteness of the paper intact. I'll add a few more here and there. Now time to add some blue flowers. रेडी हो गया है. अभी हम लोग एक सेकेंड लेयर ऑफ लीव्स ऐड करेंगे ऑन द एग्जिस्टिंग सिंगल लेयर. इसके लिए आई एम यूजिंग डार्कर शेड ऑफ ग्रीन विद द हेल्प ऑफ माय साइज 1 ब्रश एंड आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ फ्यू मोर डार्क ग्रीन लीव्स ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग लाइटर शेड ऑफ लीव्स. इससे क्या होता है, थोड़ा स्पेस जो है वो crowded दिखेगा and it will look fuller. I'm also using a dark pink to shade the centers of each pink flowers and some purple for the blue ones. हमारा half circle ready हो गया है. अभी और एक लेयर ऐड करेंगे लीव्स का and I am going to use dark green with grey. This will be the darkest shade of green in this painting, and on top of my last 2 layers I'm going to paint a few more leaves on the half circle, and I'm extending the leaves on the top just a bit more. Just a bit more of shading with light green and we will be done. मैंने ओवरऑल पेंटिंग के ऊपर एक लाइट वाटर वॉश कर दिया है. That's how the colors smudge. That's the fun of watercolor. And now to end the painting, I'm going to add little flower buds here. These are excellent fillers for this kind of design and they look very pretty. I'm using red and blue to design the buds. I hope you have enjoyed today's video. Please try this at home और comment section में मुझे ज़रूर बताना कैसा था. If you haven't subscribed my channel yet, please do that right now और bell icon button भी press कीजिए so that you get notified about all my upcoming videos. और साथ में इस वीडियो को please like और share कीजिए. मैं बहुत जल्दी वापस आ रही हूँ with a brand new video and a lot of new floral design ideas. Till then, stay happy, stay safe.